Good afternoon, student. Today we study about exfoliative dermatitis. Exfoliative dermatitis क्या होता है? This is a skin disorder characterized by excessive peeling or shedding of the skin. ठीक है, it has unknown cause. इसका कोई exact cause नहीं होता है. ठीक है, और इसका predisposing factor pre-existing of the skin disorder lice, psoriasis, ectopic dermatitis, contact with seborrheic dermatitis. ठीक है, present in most of the cases drug reaction. Sulfonamides also report to 20 to 40% in case. Lymphoma may also cause exfoliative dermatitis. उसके clinical manifestation हो गया weakness, fever, malaise, chills, weight loss is present in systemic manifestation. This is scaling, erythema, purchosis may be localized and present on entire body. Peeling of the skin to be there and patient may lose nail and hair. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक evaluation में complete history regarding to the exposure of allergen, previous disease, medicines. ओके, द नेक्स्ट इज आगे मेडिकल मैनेजमेंट होगा. इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट ईचिंग, एंटीहिस्टामिन यूज टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन, ओरल टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, यूज फॉर हाइंडर इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें. ठीक है, ओरल टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज टू हाइंडर द इम्यून रिस्पॉन्स. टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव मे बी यूज्ड. और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है इसका? पेशेंट शुड बी एजुकेट रिगार्डिंग फॉलोइंग पॉइंट्स. Find out the allergen to exposure which predispose the person who dermatitis. Avoid to exposure the allergen. फिर आता है change diet which caused by food allergen जैसे कि milk, egg, etc. Lubricate the skin to prevent dyeing as it caused by pertussis. Apply steroids ointment as thin layer after bathing. And plastic suits may be used to occlusive dressing. Always wrapped dose of oral corticosteroid drugs. That mean Vaisonal. Avoid driving in case of taking antihistamine as it caused by drowsiness.
है। फिर आता है एक्ने इज़ द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ फिलोसेशियस hair and subcutaneous structure as they open to the skin surface through pore. These glands produce sebum lipid substance. Acne may be inflammatory and non-inflammatory. ठीक है। सो यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं एक्ने वल्गैरिस के बारे में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताती हूँ। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेडिकेशन में एंटीपायरेटिक ड्रग, क्योंकि फीवर आएगा, इचिंग होगी, ठीक है, ये वो लगेगा, है ना। फिर एंटीहिस्टामिन यूज़ कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। ओरल एंड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज टू हाइंडर द इम्यून रिस्पॉन्स। टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव में भी यूज्ड। ऐसा भी हो सकता है। Okay, patient should be educated regarding to the following points: finding out the allergen and exposure which predispose the person who dermatitis. Avoid exposure to the allergen. Can change the diet which cause food allergies, example milk, egg, or lubricate the skin by drying as it. So patient should be educated regarding to the following and always try to the dose to oral corticosteroid drug that may twice a day, or avoid driving the case of taking antihistamine as it caused by drowsiness. फिर आता है patient should be educated regarding following points: find out the allergen, avoid the exposure to the allergen. ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्ने डिसऑर्डर्स पे। एक्ने डिसऑर्डर क्या होता है? एक्ने डिसऑर्डर एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम फिलोसेशियस और हेयर एंड सबसेशियस स्ट्रक्चर के लिए फॉलो करते हैं। इट ओपन्स टू द स्किन सरफेस थ्रू द पोर। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम lipid. Subcutaneous acne may be inflammatory and non-inflammatory. Acne vulgaris, it is a most common type among the all skin disorder, more common in adolescent and young to middle age adults. Okay. So यहाँ पे cause क्या है इसका? Excessive sebum production, abnormal keratinization of follicular epithelium and promin bacteria, जैसे कि acne और anaerobic bacteria cause होते हैं acne के, ठीक है। फिर आता है predisposing factor, change in hormone during puberty, menstruational cycle, genetic family history and increase the occurrence of acne. फिर आता है physiological factor, stress increase the severity of disease, infection of Pyobacterium acne. follicular epithelium
hormone during puberty, menstruation cycle, genetic family history increase the occurrence of acne, physiological factors, stress increasing the severity of disease, infection of propionibacterial acne, फिर आता है अपना हाई ग्लूकोज low diet, cow milk, worsen the acne, chocolate salt, high fat diet are not associated with the acne. फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी, इसमें सीबम सेक्रियस ग्लैंड are stimulated thyroid factors. They secrete sebum which flow out to the skin surface or pilosubcutaneous duct, not blood. और उसके बाद आता है
Allergens from back, neck, face, chest, shoulder, यहाँ पर होगा. और फंगल्स के बाद ब्लैक वाइट हाइड्रोजन स्टूल्स होगा, ब्लैक होगा वाइट स्टूल्स होंगे, पैक्यूल्स होंगे, पैक्यूल्स होंगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज स्किन डिसऑर्डर है, एडोलेसेंट में ज़्यादातर होती है. एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से होता है ये. ठीक है, फॉलिकुलर एपिथेलियम की वजह से होता है. ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के कॉज करता है. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो इसका है, हार्मोन्स के कारण ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल. ठीक है, उसके बाद अपना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द एक्ने. जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द ओवर occurrence of the acne. फिर आता है infection by the bacterial acne. High glucose loaded diet, cow milk. Physiology होता है she says gland stimulated by the various factors. They secrete sebum which flow out of the skin surface. फिर fever subspecies duct not blood abundance appear. Clinical manifestation lesions form on face, neck, back, chest, shoulder. यहाँ पे compounds हैं black and white heads, pustules, papules, ये सब चीज़. Open compounds का है black heads are inflammatory after inflammation occur after menstruation. Papules are the hallmark of the serious acne starting. May result inflammatory acne lesions include the compounds of erythematous, pustules, and cyst. Severe case of cyst form, pigmentation change occur, which leads to darkening the skin, severing, scarring also occur. तो इन सारे केसेस में होता है. तो एक्ने रेक्टोसा.
sebaceous gland. Okay, sebaceous gland, and then they secreted sebum which flow out to the skin surface. फिर आता है पैपिलो sebaceous duct get plug. जो पैपिलो देखो पहले जो सीबम कहाँ से निकलता है, sebaceous gland से निकलता है, ठीक है, वेरियस फैक्टर. फिर ये क्या सिक्रीट करता है, सीबम सिक्रीट करता है जो कि फ्लो आउट होता है स्किन के सरफेस. फिर पैपिलो sebaceous duct जो है वो प्लग्ड हो जाती है, जिसके कारण कमडम्स अपीयर होता है, जिसके कारण पिंपल्स हमको दिखने लगते हैं. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? लेजन्स फ्रॉम द फेस, नेक, बैक, चेस्ट, शोल्डर. यहाँ पर बैक में, नेक में, चेस्ट में, शोल्डर में दिखेगा. फिर कमडम्स होंगे जैसे ब्लैक, वाइट हेड्स, पिस्ट्यूल, पैप्यूल्स और नोड्यूल्स होंगे. फिर आता है ओपन कमडम्स जैसे कि ब्लैक हेड्स, इन्फ्लाम्ड लेजन, इन्फ्लामेशन अकर. फिर आता है मैनिपुलेशन, पैपुलेशन. फिर आता है नोड्यूल्स जैसे कि हॉलमार्क, सीरियस एक्ने और डीप स्कारिंग में रिजल्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है. नोड्यूल्स जैसे कि इन्फ्लामेटरी एक्ने लेजन्स इंक्लूडिंग वाइट कमडम्स, इरिथेमेटस पिस्ट्यूल, सिस्ट. ठीक है, ये सीवियर सिस्ट में होता है. ठीक है, फिर ये फॉर्म्ड होता है, पिगमेंटेशन चेंज होता है. ओके, विच लीड्स टू डार्किंग ऑफ द स्किन, सीवियर स्कारिंग ऑल्सो ऑकर्स. ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है. Next is acne rosacea. It is chronic inflammatory skin eruption occur more often in middle and older adults. It is characterized by erythema, papules, pustules और telangiectasia. Blood vessels क्या है, visible near to the surface of the skin, occur on the face, especially to the nose. Patient may have burning and itching sensation. Patient को क्या है, burning और itching sensation हो रहा है. ठीक है, स्पेशली नोज़ के तरफ में. ठीक है, फिर आता है participating factors जैसे कि more common in fair people, ज़्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, जो और टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स एंड सनलाइट एक्सपोजर, एक्सट्रीम कोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी फूड इज़ एन इमोशनल स्टेट. इसमें देखो किसी इमोशनल स्टेट में ये दिखने को मिलता है. एक इन्फ्लामेशन होता है स्किन के इरप्शन में जो कि मिडिल और ओल्डर एज के लोगों को होता है. पैप्यूल्स और पिस्ट्यूल्स दिखने को मिलते हैं. ब्लड वेसल्स विजिबल होते हैं. ठीक है, और स्पेशली नोज़ एरियाज़ पे. ठीक है, बर्निंग और इचिंग सेंसेशंस होती है. ठीक है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? दिस डिजीज स्टार्ट फ्रॉम erythema over the cheeks and nose. Patient have facial flushing, blushing, redness, burning, red bumps and small. आप सबको पता होगा, जैसे आपने करीना कपूर को देखा होगा कि जब वो रोती है तो उसको ऐसे गालों पर रेड हो जाता है, ब्लश जैसे हो जाता है, नाक पर हो जाता है. हम सब उसको एज एन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते हैं, ब्लशिंग जैसे. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्ने रोसेकिया. ठीक है, रेडनेस होना, बर्निंग जैसे रेड बम्प्स हो जाना, स्मॉल सिस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें. क्रॉनिक केस रहता है, स्किन का कलर जो है वो चेंज होता है. ठीक है, डार्क रेड टू एंड पोज बिकम इनलार्ज्ड. डार्क रेड कलर के हो जाते हैं, जो पोज होते हैं वो इनलार्ज होता है. सब्सियस हाइपरप्लेसिया होता है नोज़ में. राइनोफ्लाइजोमा प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्ने रेक्रोसा में देखने को मिलती है. सो
आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पढ़ने में दिक्कत जा रही हो, तो आप लोग मुझे बताएं, हम फिर से समझेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।